You're watching Headlines today. Let's take you straight across live to the cricket conclave. And if India had gone on and played the final in Lahore, could things have been different? Pakistan was playing at home. I think we were lucky that particular day. I think it was slightly under-prepared wicket, but tell you honestly, we were planning to bat second. We had a tournament where we were very successful of chasing, so it was, apart from Arvind, everyone wanted to bat second, but Arvind is a guy who wants to bat first even on a greenish track. And I personally feel to win a World Cup you need a little bit of luck, which we had on that semi-finals and even the finals. Like you take the semi-finals, I lost the toss. I was praying to lose that toss because the players wanted to bat second. The wicket may crumble in the second session, which happened in the second session, especially when India lost 2 wickets. So overall, I personally felt after getting 240, we knew that we could easily win that game if we get Sachin Tendulkar out. And when Sachin was batting, no one thought that the wicket was bad. As soon as Sachin got out and wicket started crumbling, turning, jumping, and most of the Indian batsmen struggled to cope up with our spinners. And I think when we played here, we never had any pressure. We were playing in front of 100,000 people, and I'm sure that there were about 15 Sri Lankans. So the pressure never got to us. And when we went to Lahore, we had more Sri Lankans in the finals, and there were Pakistanis who were supporting us. And I thought that is one place we had little pressure. Some of the seniors had little pressure, but I personally felt that we coped up very well. Let me ask, Nikhil Chopra, former India cricketer, has a question. There's a mic there, Nikhil, next to you. Sorry, thanks. Rajdeep, you said last few questions. If I could just request each one of the legendary skippers to say, 2015, World Cup's around the corner. Where do you see India's chances since we're going to be playing down under? And if there's one thing that they need to improve, what would that be? We're going to ask that in another session in any case. We have a full session on the Indian World Cup team. So we're going to reserve our gunpowder, Nikhil, for that. Because we have a long day ahead where we will ask precisely this question, who's going to win the 2015 World Cup? But I'm going to end this session by asking Sourav Ganguly that sometimes to relieve pressure, you have to take out your shirt. Wear your shirt on the balcony of Lords. Was that part of relieving your pressure? One thing is about dealing with pressure. Another thing is when you actually win the match and then you want to relieve the pressure, is the best way to do that, remove your shirt. And all I can say is that you make mistakes in life. And that was one of the mistakes I made. So, but happiest side of it is that we were on the winning side. We lost a few finals before that, 3 or 4 finals, and it was getting a bit frustrating. We lost that game also. We were 150 for 6, chasing 325, and then went on to win the game. So it was a bit of a satisfaction and a bit of a relief as well. Is that the best mistake in your life in terms of the fact that your fans seem to quite like the idea that there you were? I think the best mistake in my life I made was when I got married. Okay. And, okay. And the rest is... And basically handling marriage is as much pressure as handling the captaincy of Indian cricket. Yes, for the first 5 years, but then after that, you take each other for granted. So at the end of the day, there's one dialogue in life which Shah Rukh Khan said that end mein sab theek ho jata hai. So in everything in life, end mein sab theek ho jata hai. Okay, end mein sab theek ho jata hai. Well, all of you had great ends to your World Cup campaigns. 1987, 75 and 79, 1996, and even 2003, which was a memorable campaign for the Indian cricket team. Pleasure talking to all of you and know your views on handling pressure. Ladies and gentlemen, Sourav Ganguly, Arjuna Ranatunga, Clive Lloyd, Allan Border, give them a big hand. Time for some lighter moments here where renowned stand-up comedian whose forte is especially cricket, in fact, is speaking right now. Let's take you straight to Vikram Sathe. Shoaib Akhtar's right arm. Wasim Akram is the right answer. Huge round of applause for the gentleman there. Come on. 3 legends. Clive Lloyd had a very unique style. I don't know, Clive Lloyd,
Clive Lloyd, you know what he did was he tried to fool the opposition bowlers by showing a very composed, languid action. And there is one step that he did. I don't know whether this generation will remember. This is Clive Lloyd coming into bat. If you remember, this is a style that Clive Lloyd had. You take it from this side, little bit feet movement and out. Allan Border used to take the long back lift and everything used to go towards the gully. That was Allan Border for you. Sourav Ganguly has an optical contact lens in his eye which he adjusts to Muralitharan a little differently from Shoaib Akhtar. Here's Dada. That is Sourav Ganguly. Last question before we go on to the next session. Let me see if the young generation gets who this batsman is. Yes? Yes? Nope. Mohammad Kaif. Mohammad Kaif, you get a feeling somebody's put a cockroach in his body. I'll show you once again. Difficult for the younger generation to get it, but still there is a possibility. Yeah? Similar style, but no. Yeah? Nope. No, Shrikant was sinusitis going wrong. Sachin. 6 was at third man. No, Javed Mia had more open stance. Indian cricketer. Have to get it right. Yeah? No. Saurabh, for you? No. Dilip Vengsarkar is the right answer. Huge round of applause for Rashid. Thank you very much. Yes? If you want any requests before we leave, start the next session. Sachin. Sachin? No, Sachin I showed you, no? Thank you very much. You said what, Dhoni? You know, Dhoni, when he comes into bat, you get a feeling that entire Jharkhand is coming into bat. Here's MS. Thank you very much. You've been a fantastic audience. Thank you. All right, at the Cricket Conclave, sports editor Vikrant Gupta is now chairing the very next session that talks about can India defend the 2015 World Cup title. हमेशा हमारा साथ निभाया भी है और अगर आप पीछे इंग्लैंड में देख लीजिए जो टेस्ट मैचेस हुए हैं या वनडे जो हुए हैं इसमें क्या है कि वनडे सीरीज तो हमने जीती है वहां पर बैट्समैन अगर रन बनाएंगे तो मेरे विचार में क्या है कि बॉलर जो है साथ निभा सकते हैं। बाकी बॉलिंग का जो पूल है मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा है। अगर हमारे पास अगर देखें 5-6 ऐसे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर है, उसके साथ स्पिनर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, पर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है भारत को यहाँ पर मेरे विचार में, बिकॉज कि भारतीय टीम जो है पहले टूर कर रही है, वहाँ पे 2-3 महीने का टूर है वहाँ पे, तो वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा भारतीय टीम के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम 1983 में जब हम ये टूर्नामेंट जीते थे, पर हम वेस्ट इंडीज़ में खेल कर आए थे, तो जब आप खेल कर आते हैं 1-2 महीने खेल कर आते हैं उनके साथ, तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है आपके परफॉर्म करने के। पर अगर हम रन बना लेते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हमारी बॉलिंग अटैक जो है आपको लेट डाउन नहीं करेगी। और दूसरा जो आमिर ने कहा कि बॉलर्स को बड़ा ज़रूरी है अपने आप में एडजस्ट करना कि कहाँ पे गेंद डालना है और कहाँ पे हम विकेट ले सकते हैं। भारतीय बॉलर जो है ज़्यादातर विकेट लेने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है। अगर वो रन रोकने की कोशिश करें, रन रुकते नहीं है कभी भी, रन तभी रुकते हैं जब आप
आप बैट्समैन को आउट करते हैं। तो ये है कि ऐसे जैसे जो आप भारत के चांस कह रहे हैं, जैसे 4-5 और भी टीमें हैं जो मैं समझता हूं कि ये टूर्नामेंट को जीत सकती हैं। दादा, मदन जी कहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, आप नवंबर के आखिरी हफ्ते में जाएंगे, 4 टेस्ट मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड देखते हुए शेन वॉटसन ने कल कहा कि 4-0 से कम नहीं होगा। चलिए, इतने पेसिमिस्टिक भी नहीं होते। उसके बाद इंडिया एक ट्राई सीरीज खेलेगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ। वर्ल्ड कप तक जाते जाते भारत वहां पर तकरीबन 2.5-3 महीने रह चुका होगा। क्या ये आसान होता है उसके बाद खेलना, या मुश्किल हो जाता है? क्योंकि 1992 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ, इंडिया पहले गया, टेस्ट मैच खेला, ट्राई सीरीज, हारता गया और वर्ल्ड कप तक सब थक गए। नहीं, मैं आपके साथ सहमत हूँ कि थोड़ा सा लंबा होगा ये सीरीज, लेकिन जितना मैं जानता हूँ भारतीय बोर्ड ट्राई सीरीज के बाद टीम को 10-12 दिन के लिए वापस लेके आएंगे भारत में अपने घर जाने के लिए, तो उसी से वो रिफ्रेश होंगे। लेकिन इनको एक चीज़ समझना होगा कि जैसे हम समझते हैं कि लंबा टूर है, थकान होगी, टफ क्रिकेट होगा, 4 टेस्ट, ट्राई सीरीज, उसके बाद वर्ल्ड कप, लेकिन उनको ये सोच के जाना चाहिए कि देखिए ये आइटिनरी तो है, ये शेड्यूल तो है, तो हमें इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, तो कहीं ना कहीं 7 दिन के लिए टीम को वापस लाना बहुत ज़रूरी होगा, जो हम आशा करते हैं कि भारतीय बोर्ड ज़रूर करेंगे, उससे ज़रूर फर्क पड़ेगा। हमेशा जब बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं भारत अच्छा करता है। क्या बैटिंग ऑर्डर सेटल्ड है? क्योंकि खिलाड़ी हैं, ये वही हैं जिनको मौके मिलते जा रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी एक सुरेश रैना ने दिखाई है, विराट कोहली अब बड़ी देर बाद फॉर्म में वापस आए हैं। क्या आपको लगता है कि शिखर धवन, रहाणे, रायडू ये पूरी तरह से वर्ल्ड कप के लिए तैयार है? अभी भी वीरेंद्र सहवाग, गंभीर और युवराज जैसे खिलाड़ियों के लिए दरवाजा खुला है? देखिए, दरवाजा तो किसी भी खिलाड़ी के लिए खुला है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लड़के जाएंगे वर्ल्ड कप और ये खेलेंगे। रोहित शर्मा, हम शेखर धवन, अजिंक्य रहाणे, अंबती रायडू, ये सारे वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो अगर खराब नहीं खेलते और भारत अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस नहीं करते, जो टेस्ट और वनडे होगा वर्ल्ड कप से पहले, मेरे हिसाब से वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह के लिए वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल है। अगर मुझे आप इस समय पूछेंगे और अगर ऑनेस्टली मैं आंसर आपको दूं, तो मुझे नहीं लगता वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह आगे जाके 2015 के वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्योंकि इतने पास जाके, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कप्तानी में भारतीय टीम को आगे लेके गए हैं, जैसे उन्होंने अपनी कप्तानी की है, मुझे नहीं लगता इतने पास जाके उन्होंने इतने सारे प्लेयर्स चेंज करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो बड़े प्लेयर रहे हैं भारत के लिए, वीरेंद्र सहवाग मेरे हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन आई हैव सीन क्वाइट अ फ्यू, लेकिन एक गेम के ऊपर जो इम्पैक्ट किसी बल्लेबाज का है वो वीरेंद्र सहवाग से ज्यादा किसी का नहीं है। युवराज सिंह की जो परफॉर्मेंस है भारत के लिए वर्ल्ड कप में, 2003 हो, 2007 हो, जो T20 वर्ल्ड कप हम जीते जहां उन्होंने 6 छक्के लगाए इंग्लैंड के सामने, और 2011 वर्ल्ड कप जहां वो मैन ऑफ द सीरीज हुए, वो एक स्पेशल प्लेयर है मेरे हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं समय हर प्लेयर को पकड़ लेता है, और शायद युवराज सिंह के लिए इस वर्ल्ड कप में आना मुश्किल होगा। मैं क्रिकेट में नामुमकिन नहीं सोचता, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होगा युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग को इस वर्ल्ड कप में। आमिर, आपके लिहाज से युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग की जगह है या फिर नहीं है? देखिए, आपने ये देखना कि इनकी करंट फॉर्म क्या है। अभी जब आपने वीरेंद्र सहवाग को करंटली देखा तो आउट ऑफ सॉर्ट्स थे, इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। ही इज़ बीन अ ग्रेट क्रिकेटर, लेकिन जिस तरह सौरभ ने कहा कि टाइम आपको पकड़ लेता कहीं ना कहीं आके। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम सेटल है, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक अगर अपोजिंग कैप्टन आप इंडिया टीम को एनालाइज करते हो, तो अगर आप अर्ली विकेट्स ले लो, तो इंडिया के पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो को 10-15 ओवर जो है वो गेम अपने हाथ में लेके दोबारा से प्लेटफॉर्म सेट करे और टीम को आगे लेके जाए। सारे जो हैं वो स्ट्रोक मेकर्स हैं, दे लाइक टू टेक ऑन द बॉलर्स। समबडी इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स, आपको बैटिंग ऑर्डर में एक बंदा चाहिए जो आपकी इनिंग्स को कैरी भी कर सकता है अगर वहाँ पे आपकी अर्ली विकेट्स गिरते हैं। रोहित शर्मा इज अ गुड चॉइस। उसकी